everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. चलो, let us add something to that and let us for that look at this question. There is a fixed hollow cylinder having a smooth inner surface. So हमारे पास एक hollow cylinder है, ठीक है? So hollow cylinder will look like what? It will look like this. Inner space is empty, right? And here, just the top view of this cylinder is made here like this. Okay, so we are talking about hollow cylinder. Radius of cylinder is given as 4 meter. A uniform rod of mass 4 kg and length 4 meter is released from vertical position inside. So let's say there is a rod like this in this position, and we will be releasing it from this position actually. Then what we have to do is, first of all, we have to convince ourselves that rod will perform pure rotation about the axis of the cylinder passing through O. So जैसे ही हमने इस रॉड को रिलीज किया, then it is said that it will perform pure rotation around point O. इस चीज के लिए हमें खुद को कन्विंस करना है कि ये होगा या नहीं होगा, मतलब हो रहा है ऐसा गिवन है, but how it will happen, that we have to give the reasoning in order to make ourselves understand. डन है, सो वो काम हम करेंगे. एंड फाइनली इफ yes, that is yes actually, we have to talk about calculation of angular speed of rod when it becomes horizontal. So when this rod will be in this position sort of, what will be its angular velocity omega, that is what we are getting asked. तो सबसे पहले देखो ए पॉइंट के अराउंड ये प्योर रोटेशन करेगा या नहीं करेगा, आप कैसे सॉल्व करोगे. जैसे देखो आपने एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन किया होगा या फिर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है. सपोज कर लो एक बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. लेट्स से इट इज अ डिस्क. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट ओ, and there is an axis passing through point O perpendicular to the plane of disk around which it is rotating. So if I ask you what will be the velocity of this point, so velocity of this point will be in this direction. And if you draw perpendicular to this velocity, तो perpendicular ऐसा होगा, and it will, it will reach to the point O, it will intersect point O sort of, right? कोई भी पॉइंट की आप वेलोसिटी निकाल लो किसी भी इंस्टेंट पे, उस वेलोसिटी वेक्टर पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दैट विल पास थ्रू दिस आईसीआर. आई मीन not this is instantaneous, that is actually fixed one, but yeah, it will pass through center of rotation point, right? सो इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि if two if there is a body and if this point is having velocity v, and then it's and if different point of this body has different velocity, that means it is rotating. And if we have to talk about where will be its center of rotation point, even if instantaneously, then what we will do, we will draw a perpendicular line onto this velocity vector, so somewhere here. And so many information will be given, depending on which we will be able to calculate that ICR will be, or that center of rotation point will be here or here this side. So this is altogether a different topic and different discussion. But यहाँ पे देखो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, अगर आप उस पे परपेंडिकुलर बना रहे हो, देन दैट विल पास थ्रू दैट सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट. देन अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. जैसे आपने एक क्वेश्चन किया होगा, क्या पता किया होगा, ऐसा कुछ लैडर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, लेट्स से रॉड ही है सपोज कर लो, एंड दिस इज केप्ट ऑन दिस वॉल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, अब क्या होगा अगर आपने इसको रिलीज कर दिया है, व्हाट विल हैपन, इट विल स्लिप. एंड जब ये मूव करेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी, इट इज स्लिपिंग अलोंग द वॉल, सो इट्स वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड इट इज स्लिपिंग अगेन अलोंग द surface, its velocity will be in this direction. And if you have to talk about, what is the instantaneous center of rotation point for this thing, because it is not going to be in pure rotation while it will fall down, right? It is not. So हमें हमें क्या करना है, इस पे आप परपेंडिकुलर बना दो, इस वेलोसिटी वेक्टर पे इस पे बना लो, and then there is a point where these two are intersecting, that will be at that point of time the center of rotation. Okay, so इस तरह से भी हम निकालते हैं. अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. when you are letting it go, when you are when you are allowing it to slip down, or you can say when you are releasing it, then क्या होगा बताओ. इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, along the surface, so ऐसा. इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, along the surface, ऐसा. अब आप क्या करो, सेंटर ऑफ रोटेशन को ट्रेस करने के लिए इस वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर बना लो, तो डेफिनेटली दिस इज टेंजेंट, इस पे परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा which will pass through center, right? And this is also along tangential direction, right? So perpendicular to it will pass through what, center, and these two are meeting at this point O. So definitely this is the point
दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट। लेकिन हर मोमेंट पे दिस विल बी द पॉइंट, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये रॉड ऐसा भी है ना, ऐसा भी है, in this position if it is, then also its velocity of this point is in this direction and this point is in this direction, always along the tangent, always along tangent to the surfaces। और ये सर्कुलर सर्फेस है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो, अगेन इट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो हमें ये दिख रहा है कि दिस रॉड व्हेन रिलीज्ड विल एक्चुअली विल बी इन प्योर रोटेशन अराउंड पॉइंट ओ। तो ये हमारा सॉर्टेड है, ये हम कन्विंस कर चुके हैं खुद को कि ओ के अराउंड ही प्योर रोटेशन करेगा। डन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? Now we know that this rod when released will perform pure rotation around point O. Let us focus to what we were asked to calculate in the question, and हमें निकालना क्या था? Angular velocity of the rod when it becomes horizontal। तो चलो इसको horizontal कर लेते हैं। Suppose कर लो ये ऐसे horizontal हुआ। Then in this position how we can go around calculating omega? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बेसिक चीज जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज एनर्जी कॉन्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन इज नॉट इन्वॉल्व, देर इज नो डिसिपेटिव फोर्स, सो वी कैन टॉक अबाउट कॉन्जर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या है? इनिशियली द मोमेंट जस्ट बिफोर इट वॉज रिलीज, काइनेटिक एनर्जी इज डेफिनेटली जीरो, it was in rest, right? Potential energy will be how much? For that we first need to define reference line। तो चलो इस horizontal position को ही मैं reference line लेती हूँ, and here I am talking about h equal to 0। So initially it's h is what? It's h is this one, right? So at this height it is, and if we have to calculate this one, I mean what will be this value? So यहाँ से ऐसे perpendicular बना लो, ऐसे, sorry ये line ऐसे खींचो, then this will be equal to how much? This is the length of half length of rod। हाफ मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो यहाँ पे रॉड है, इफ यू कंबाइन इट लाइक दिस, इफ यू कंबाइन इट लाइक दिस, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, and if you drop a line over here and draw the perpendicular, these two triangles will be what? Congruent, right? So this is basically dividing this rod into two equal part, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इसको 2 मीटर आप ले लो, and this is 4 मीटर, right? Because this is radius, so height will be equal to 16 minus 4 का root under, so that is 2 root 3 meter। ठीक है? So initial potential energy आप क्या बोलोगे? mg 2 mg root 3। So this is initial mechanical energy। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आप क्या लिखोगे? पोटेंशियल जीरो होगा, काइनेटिक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो एंड इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी हैज टू बी सेम, सो आप क्या बोलोगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mg root 3। So now we know we need I in order to नो ओमेगा, राइट? सो आई को निकाल लेते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के अराउंड, आई मीन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस which is perpendicular to this rod passing through this point P, let's say this is point P, done it? So that will be how much? That is ml square by 12, right? So what is the mass of this thing? Mass is mass of rod is 4 kg, right? So this is 4 kg into L square, that is 16 ml square by 12। So this is your 16 by 3 plus, I mean around this point, around an axis passing through this point is how much? This, so this is your basically ICM, and we have to calculate around this. So for that we need this distance, and we can use parallel axis theorem. Let's say this is d distance, and this will be same as this one, right? The one we have got here 2 root 3, क्योंकि यहाँ से भी आप ये निकालोगे, you will be getting this same, right? So this is 2 root 3। So let us use that 4 into 2 root 3 का square, and that will become how much? 12। ठीक है? So this is this much, यानी कि 16 by 3 plus 48। Okay, and if you do that, how much you will be getting? Let us calculate this one. So almost, I mean exactly 160 by 3। ठीक है? So this will be how much? This will be your, let us put it 160 by 3। Then this is this much moment of inertia। Now let us compare this, I mean let us use that equation, half I 160 by 3 omega square is equal to mgh, वो कितना था तुम्हारा? 2 mg root 3। So 2 root 3 into mass is 4 into 10। Now you just need to solve it, right? So 10 से 10 चला गया, 4 से ये 4 जाएगा, 2 से ये 2 जाएगा, and this 2 will get cancelled, and this will be how much? Omega square is equal to 3 root 3। ठीक है? And omega will be equal to how much? Root under 3 root 3, sort of।
ठीक है, so this will be your basically answer. Done it? I hope it is clear, and I hope you are able to make sense of this question. I mean, calculation part was not difficult. Only we needed to convince ourselves that this will perform pure rotation around point O. So I hope you have understood this question. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.